Assalamualaikum sir. वालेकुम सलाम। चलें जी, let's start. So I don't think there's anyone else joining. All right, I'm going to share my screen with you guys. अच्छा, by the way, मैंने just to update you guys, इसका पूरा solution मैंने आप लोगों के उस पे folder में डाल दिया, ठीक है? I've solved all of these. You guys can use it as practice if you want. बल्कि if you want नहीं, मैं कर ही दूंगा ये. मैं इसका एक empty version भी डाल दूंगा so that if you guys want to practice, you can print that out and practice it. ठीक है? इसमें मेरे कुछ notes वगैरह भी हैं. खैर notes की आप लोगों को इतनी ज़रूरत नहीं है because वो आप लोगों को पहले से मैं लिखवा चुका हूँ. But anyway, feel free to use them. ठीक है? So yeah. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सर्कुलर मेजर, ठीक है? सो वालेकुम सलाम, क्या हाल है?
अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुना? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे आपसे कुछ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस पे सवाल पूछने थे, तो वो क्लास के बाद आप क्लास के बाद। बता देंगे? हाँ हाँ, श्योर श्योर, नो वरीज। अच्छा अच्छा, ये हम पार्ट 1 यहाँ पे एंड कर रहे हैं, ठीक है। इसको मैं रीनेम कर देता हूँ पार्ट 1, सो दैट यू गाइस जस्ट डाउनलोड दिस वंस, ठीक है। और ताकि आपको बार बार एक बड़ी फाइल ना डाउनलोड करनी पड़े, ठीक है। अब हम लोग करते हैं पार्ट 2। सर ब्राइट पर ट्रिग्नोमेट्री की हैं वीडियोस? नहीं, ट्रिग्नोमेट्री की नहीं। ब्राइट पे हैं, देयर इज डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वो भी थोड़ी बेसिक। डिफरेंशिएशन तो पूरी है, इंटीग्रेशन बेसिक है। देयर इज और क्या है, देयर इज एपीजीपी, देयर इज क्या बोलते हैं, देयर इज एपीजीपी, देयर इज quadratics, there is simultaneous, and I think that's it. Yeah, simultaneous, quadratics, APGP, differentiation, integration. हाँ, integration की अच्छी खासी अब सर आ आपके गई। यूट्यूब चैनल पर होगी किसकी? ट्रिग्नोमेट्री की? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री की मैं बना रहा हूँ, अभी मैंने 2 वीडियोस बना लिए हैं। I have some basics, और ट्रिग्नोमेट्री की मैं प्लेलिस्ट आहिस्ता आहिस्ता कंप्लीट कर रहा हूँ, so you will find it. लेकिन आप रिकॉर्डिंग्स देख लो ना, आपको वीडियोस की क्या जरूरत है? When you guys have recordings, तो just watch the recordings. मैं बना रहा हूँ वैसे, ठीक है। I mean, I am in the process of making them, but for you guys I'd suggest just watch the recordings, you know, पूरा syllabus accordingly cover हुआ है, so why wait for that? Anyway, okay, so basically आज हम लोग start कर रहे हैं circular measure. See, let me just write that nicely. ठीक है। अब सर्कुलर मेजर में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो है आपका फॉर्मूलास, ठीक है। which is very, very simple. I mean, you might think it's difficult or anything like that, but it's not, ठीक है। It's fairly simple. So yeah, so basically, चलो मैं जरा आपके पास फॉर्मूलास खोलूं ताकि मैं आप लोगों को कोई दिखाना भूल ना जाऊं। सो इसमें बस एक चीज का जो आपने ख्याल रखना है, वो ये कि इसमें आपका थ्रू आउट कैलकुलेटर जो होगा वो किसमें होगा? रेडियन मोड में होगा, ठीक है। सो इट्स जस्ट दैट वी गोना बी लर्निंग समथिंग दैट वी ऑलरेडी नो, ठीक है, बट वी जस्ट गोना बी डूइंग इट एंड अप्लाइंग इट इन अ डिफरेंट वे, ठीक है। that's all there is in circular measure, ठीक है। Okay, so I'm gonna write down the formulas, और formulas हम देखेंगे डिग्रीज में भी देखेंगे और हम रेडियन में भी देखेंगे, ठीक है। So yeah, there we go. Okay. सबसे पहले आपका है एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है ना। Now how do you calculate area of circle? Area of circle is calculated by using pi r square, ठीक है। Doesn't matter whether it's degrees, doesn't matter whether it's radian, it's going to remain pi r square, ठीक है। अच्छा, फिर how do you calculate circumference of a circle? Question for you guys. 2 pi r. It's 2 pi r, ठीक है। रेडियन हो डिग्री हो, it's going to be 2 pi r regardless, ठीक है। अच्छा, now from this point onwards things are going to be slightly different. Area of sector, how do you calculate area of sector? याद है किसी को? सर थीटा अपॉन 360 into
2 पाई आर था, ये शायद into पाई pi आर r स्क्वायर, square, पाई sorry, आर into pi स्क्वायर। r square, एरिया निकालना है ना, तो into pi r square, ठीक है। अच्छा, अब basically this is when you have angle is when angle is in degrees, ठीक है। इसमें थीटा जो है हमारा वो किस में है, थीटा इज इन डिग्रीज, ठीक है। लेकिन रेडियन में क्या होगा, अगर रेडियन में हमें चेंज करना है तो हमें किसको चेंज करना पड़ेगा, हमें ये 360 को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा अब अगर हम 360 को चेंज करते हैं तो 360 को चेंज अब कैसे करेंगे, थीटा थीटा ही रहेगा, ठीक है। 360 किसके बराबर हो जाएगा, हाउ मच इज 360 इन 2 2 pi. पाई। इट्स 2 पाई, वेरी गुड, 2 पाई इनटू पाई आर स्क्वायर। सो जस्ट गिव मी 1 सेकंड। बार-बार आना जाना नहीं करो। हमने iPad का मैसेज देखा। नहीं, मैं भी पढ़ रहा हूँ। जल्दी चाहिए, जल्दी जल्दी। ठीक है, अब बार-बार आना जाना नहीं करो, मैं बिजी हूँ, क्या? इंसान देख लेगा। अच्छा, मैं बाद में, अभी मैं बिजी। ओके, sorry about that. थीटा अपॉन 2 पाई इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ऑफ कोर्स दिस विल बी सिंप्लीफाइड, इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो पाई और पाई हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एंड वी आर लेफ्ट विद व्हाट, वी आर लेफ्ट विद 1/2, ठीक है। 1 इसलिए बिकॉज थीटा के साथ कुछ भी नहीं है, दैट मींस देयर इज 1, ठीक है। एंड 1/2 आर स्क्वायर टाइम्स थीटा, और ये जब के लिए है जब थीटा इज इन रेडियन, ठीक है। अभी we're just writing down the formulas, ठीक है। this will happen कि जब हम formulas लिख रहे हैं तो हो सकता है आप लोगों को ये हो रहा हो कि यार ये formula तो हम लिख रहे हैं लेकिन हम where exactly are we going to use them, so don't worry about that too much, ठीक है। once we're doing questions so you will find कि इसका use क्या है, ठीक है। this is sort of समझो हम एक formula bank बना रहे हैं and we're going to be coming back to it over and over again and once when we're doing the questions, ठीक है। Sir, हाँ जी, बोलें। sir, ये वाले 1/2 वाले को we can write it as theta upon 2 multiplied by r square also. Yeah, no? yeah, absolutely, absolutely. You can write it as r squared theta times 2. You can write it as multiplication, है ना, so changing the order doesn't really matter. You can write it as theta upon 2 into r square. बस it's just that कि जो standard लिखने का तरीका आपको मिलेगा वो आपको मिलेगा 1/2 r squared theta, तो इसलिए I've written it that way so that you start becoming more and more familiar with it, ठीक है। Okay. फिर है आपका क्या, फिर है आपका arc length. Now arc length का फॉर्मूला भी hopefully आप लोगों को याद होना चाहिए, याद है? सर थीटा अपॉन 360 into 2 पाई आर। थीटा अपॉन 360 into 2 pi r, ठीक है। दिस इज व्हेन थीटा इज इन डिग्रीज, ऑल्दो मैंने ऊपर डिग्रीज का कॉलम लगाया हुआ है लेकिन इधर भी मैं बार-बार लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को याद रहे। बट व्हेन यू वांट टू चेंज दिस इनटू रेडियन, तो रेडियन में हम क्या करेंगे, हम 360 को कन्वर्ट कर देंगे 2 पाई में इनटू 2 पाई, ठीक है। और and then what happens is कि 2 pi और 2 pi आपका कैंसिल हो जाएगा and you're just left with r theta. अच्छा, arc length को हम नॉर्मली s से डिनोट करते हैं, ठीक है। which is why जब आप इसका फॉर्मूला लिखा हुआ देखोगे ना तो you'll see it as s is equals to, ठीक है। and once you simplify and all everything, so what this becomes ultimately is this becomes s is equals to r theta, और यहाँ पे भी remember theta is in radian, ठीक है। अच्छा, फिर you know what happens, something interesting happens then, as consequently हमें आर्क एरिया निकालने का एक और फॉर्मूला मिल जाता है, ठीक है। एंड we'll see what that is. इनफैक्ट थोड़ा इसको और नीचे ड्रैग कर लेते हैं for some working. ओके, और वो दूसरा फॉर्मूला हमें क्या मिलता है, दूसरा फॉर्मूला हमें ये मिलता है कि अगर हम हाफ आर स्क्वायर थीटा में से किसी तरह और थीटा अलग कर लें तो हम उसको किससे रिप्लेस कर सकते हैं, हम उसको s से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है ना। I'll tell you what I mean. So basically what I'm saying is कि r स्क्वायर थीटा है ना, तो अगर हम इसको ऐसे लिख लें हाफ इंटू r इंटू थीटा, so what's r times theta is equals to, it's equal to s, meaning it's equal to the arc length, which means that this formula, ठीक है, can also be simplified and written as half r s, ठीक है। But again, we're gonna see, अब हो सकता है आप लोगों के जहन में एक क्वेश्चन आ रहा हो, लेजिट क्वेश्चन है कि भाई हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है। सो ऑफ कोर्स व्हेन वी आर डूइंग क्वेश्चंस वी विल हैव एन आइडिया कि कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है। अभी इतना बता देता हूं कि व्हेन यू हैव द रेडियस इन द आर्क लेंथ, ऑफ कोर्स यू आर गोना गो विद द फॉर्मूला दैट वेयर यू कैन प्लग इन द रेडियस इन द आर्क लेंथ
when you have the radius and the angle, then of course you're going to go with the formula where you have the radius and theta. ठीक है. अच्छा, एक और चीज which I conveniently just ignored and just assumed कि आप लोगों को पता होगी. I hope everyone knows what a sector is. सेक्टर पता है ना सबको क्या होता है? जी सर पता है सर, वो केक स्लाइस भी होता है. Yeah, it's part of a circle that's cut from the center. ठीक है. So theta जो होता है वो आपके जो रेडियाई के बीच में एंगल होता है वो होता है. ठीक है. रेडियाई is plural of radius by the way. ठीक है. And ये आपका रेडियस होता है. ठीक है. और ये आपका सेक्टर है. और आर्क जो है हम बोलते हैं पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस को. ठीक है. जब आप पूरा कंपास घुमाते हैं तो फिर आपके पास सर्कल बनता है, लेकिन अगर आप पूरा नहीं घुमाते, थोड़ा सा ही छोड़ देते हैं, तो फिर आपके पास आर्क बनता है. ठीक है. दैट्स द ओनली डिफरेंस बिटवीन एन आर्क एंड अ कंप्लीट सर्कल. So what you're looking at over here is arc length. और not necessarily length की नहीं जरूरत नहीं है. length तो of course जब हम calculate कर रहे हैं, but arc. ठीक है. फिर हम इसको distinguish करते हैं between major and minor. Major जो होता है वो बड़ा वाला होता है. ठीक है. और minor जो होता है वो छोटा वाला होता है. ठीक है. pretty self-explanatory. जब भी आप किसी सर्कल को बीच में से कट करते हैं, ठीक है, so you always end up, unless you're doing it equally, you end up with two sizes of sectors, एक बड़ा एक छोटा. ठीक है. so जो बड़ा होगा उसको मेजर बोलेंगे, जो छोटा होगा उसको माइनर बोलेंगे. ठीक है. just remember that. okay, फिर आता है आपका पेरीमीटर ऑफ सेक्टर. ठीक है ना. as far as perimeter of sector goes, इसमें there's nothing too complicated. ठीक है. all you gotta do is P is equals to R plus theta upon 360 multiplied by 2 pi R. ठीक है. R plus R for the two radii and theta upon 360 into 2 pi R is for the arc length. ठीक है. but for radian क्या होगा? radian में होगा आपका R plus R theta. ठीक है. अच्छा, ये जो फॉर्मूलाज मैं लिखवा रहा हूँ, इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि आप बस इसको जल्दी से याद करना शुरू कर दें. ठीक है. बहुत सारे फॉर्मूलाज हमें याद करने की जरूरत नहीं है. जैसे पेरीमीटर का फॉर्मूला, तो कभी भी कोई भी पेरीमीटर का फॉर्मूला याद मत करना. ठीक है. you'll just be wasting a lot of time. मतलब you're just going to be using the space in your brain unnecessarily. ठीक है. पेरीमीटर is just sum of all sides. That's all you need to remember. ठीक है. जितने साइड्स हैं, और क्योंकि वो इतना वेरी करेगा डिपेंडिंग ऑन द शेप कि आप कितने फॉर्मूलाज याद करेंगे. ठीक है. इसी तरह से जब हम मेंसुरेशन करेंगे मैथ में, तो मैं टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला फॉर कंपोजिट सॉलिड्स कभी नहीं याद कराता. ठीक है. बिकॉज देन यू विल हैव लाइक अ होल बंच ऑफ वेरिएशंस टू रिमेंबर. अच्छा, फिर यू हैव एरिया ऑफ ट्रायंगल. दिस इज समथिंग यू ऑल शुड बी फेमिलियर विद. दैट्स एक तो हाफ टाइम्स बेस टाइम्स हाइट है. ठीक है. बट वो फॉर्मूला is क्या कहना चाहिए, it's too basic. ठीक है. this is the formula that we use when you have two sides and an included angle. ठीक है. फर्क सिर्फ ये है, इसमें फॉर्मूलाज डिग्री और रेडियन दोनों के लिए सेम है. बस फर्क इतना है कि इसमें जो है आपका वो C is in degrees. ठीक है. और इसमें ये है कि आपका C, एंगल C की बात हो रही है. यहाँ एंगल C is in. सर साइन रूल और कॉस रूल एड मैथ में इस्तेमाल हो सकते हैं ना? बिल्कुल हो सकता है. साइन रूल, कोसाइन रूल, मैथ की कोई भी चीज एड मैथ में इस्तेमाल हो सकती है. ठीक है. वो आपको सेपरेटली नहीं पढ़ाया जाएगा. एंड लेट मी टेल यू व्हाट, it's not just साइन रूल एंड कोसाइन रूल जो कि इस्तेमाल होगा. एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल्स भी इस्तेमाल हो सकती हैं कभी कभी. ठीक है. ऑल्दो वेरी रेयर, बट हो सकती है. नॉट दोस हार्डकोर प्रॉपर्टीज सेम सेगमेंट वाली ये वो, लेकिन रेडियस एंड टैंजेंट वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो सकती है. आपका एंगल ऑफ द डायमीटर इज इक्वल टू 90 डिग्रीज वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो सकती है. ठीक है. ये सारी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो सकती हैं. एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट द सर्कमफ्रेंस, ये वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो सकती है. ठीक है. ओके. सो अच्छा, अब हम एक काम करेंगे, हम इसको ना फिल करते रहेंगे. ठीक है. अभी we're just gonna leave it like this. We're gonna do some questions and question करते करते जब हम कुछ फैक्ट्स देखेंगे कि हाँ भाई ऐसा हो तो ये फैक्ट है. ठीक है. जैसे शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए आपके पास कुछ स्टैंडर्ड केसेस हैं. ठीक है. सो हम उसको यहाँ पे फिल करते रहेंगे. So I'm gonna leave some space. I'm gonna leave 2 pages. ठीक है. And then यहाँ से हम कर रहे हैं अपने क्वेश्चंस. ठीक है. सो क्वेश्चंस इसके बहुत आसान है, शुरू के तो एटलीस्ट बहुत ही आसान है. सो उनको हम बस ये करें, आप लोग अपना कैलकुलेटर रेडियन मोड में कर लें. And let's get to work. और ये टॉपिक जो है ना आपका सर्कुलर मेजर हो गया, बायनॉमियल हो गया, ये
मैथ्स और एड मैथ्स में, सॉरी, O level एड मैथ्स में और AS मैथ में completely identical. If I were to give you guys an AS math question, you probably wouldn't even notice. In fact, you know what, at some point I will do that and then I'll tell you guys after I've done that कि ये उसका क्वेश्चन था, ठीक है। अच्छा, शुरू के क्वेश्चंस इसके बड़े सिंपल से हैं, जस्ट अ रिवीजन। इट्स आस्किंग यू टू चेंज दीस एंगल्स टू रेडियंस इन टर्म्स ऑफ पाई, ठीक है। आई होप एवरीवन रिमेंबर्स दैट। बस ऐसे ही हम दो तीन इसके सवाल कर लेते हैं, ठीक है। यू गाइस डोंट हैव टू कॉपी दिस और एनीथिंग, बस ऐसे ही हम इसको लिख लेंगे, ठीक है। सो इफ यू हैव लेट्स से 10 डिग्रीज, यू वांट टू कन्वर्ट फ्रॉम डिग्री टू रेडियन, तो हम इसको यहाँ पे लिख भी लेते हैं जरा, ताकि हमें कॉर्नर में डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री। बताइए कैसे कन्वर्ट करते हैं डिग्री टू रेडियन? Does everyone remember? If you have theta degrees and you want to convert this multiply by pi upon 180 degrees. multiply by pi upon 180 degree, ठीक है। And what if it's the other way around? Sir, वो theta in radian multiplied by 180 upon pi. Yep, there you go. ठीक है। So make sure to remember this. It's fairly simple and there's nothing too complicated about it, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं जरा कुछ क्वेश्चंस करते हैं। Alright, so let's start with part A. Sir? हाँ जी बोलें। सर वो एक दफा दिखा सकते हैं जो आपने अभी लिखा था डिग्री टू रेडियन? ओके सर, थैंक यू। ठीक है, चलो let's just do a couple of questions, ठीक है, just to get into the flow of things. 10 डिग्रीज को कन्वर्ट करना है तो मैं कैसे मल्टीप्लाई करूंगा? इनटू पाई अपॉन 180। 180, ठीक है। सो हम लुकिंग पाई की टर्म्स में छोड़ना है, सो 1/18 पाई आंसर आ गया, ठीक है। लेट्स से आई वांट टू कन्वर्ट 225 डिग्रीज, तो क्या होगा? 225 into pi upon 180. 225 into pi upon 180. Now without using a calculator मुझे बताओ 360 किसके बराबर होगा? ऐसे 2 pi, 2 pi, so without 3 pi using upon 180, 3 upon 180 pi, so 1/60 pi. नहीं, wait a minute. 360 को तो into pi upon 180 करेंगे ना, तो सीधा सीधा 2 pi हो जाएगा, that's it. Sir, 360 will be 2 pi multiplied by pi upon 180. No. 360 will be, सुनो, हम 2 pi को दोबारा थोड़ी, हम ये तो हम डबल कर रहे हैं ना। 360 डिग्रीज को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए we'll just do 360 multiplied by pi upon 180. Get it? 2 pi को क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? नहीं, देखो, अगर हम 2 pi लिखेंगे so that means हमने उसको रेडियन में ऑलरेडी कन्वर्ट कर लिया। अगर हम रेडियन में कन्वर्ट करके फिर रेडियन में कन्वर्ट करें, that doesn't make sense. देखो बता, the angle is 360, you're going to multiply it by pi upon 180 to convert it into radian. There you go. ठीक है, अब जब हम ये करेंगे तो हमारा आंसर 2 pi आएगा। Get it? Now this is 360 in radian. Clear है? Got it, sir. Yes. Alright, 720 कितना होगा बताओ? 4 pi. 4 pi, ठीक है। अच्छा, let's just quickly change a couple of these into degrees, ठीक है। pi upon 2 without using a calculator बताओ कितना होगा? 90 degrees. 90 degrees. ठीक है। अच्छा, in case आपने कैलकुलेटर यूज करना ही है तो ऐसे ही कर लो, ठीक है। विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर मैं इसलिए नहीं कर रहा कि ये जबरदस्ती है कि आप लोगों को याद करना है। आई एम जस्ट डूइंग इट सो दैट you guys can save some time, ठीक है। So into 180 upon pi से हमने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। Now let's do pi upon 12. Pi upon 12 के लिए we'll do pi upon 12 into 180 upon pi. So what are we looking at? बताएं जरा। Sir, 15 degrees, ठीक है। So these are some basic questions. इसको हम बस इतना ही कर लिया हमने, काफी है। एक आती है डेसिमल वाले कर लेते हैं। Let's do part B and D and let's do part B and D of 3 and 4, ठीक है। So 55 डिग्रीज है, इसको कन्वर्ट करना है रेडियन में। अब इसका आंसर जो है हमने पाई के टर्म्स में नहीं देना, so हम इसको करेंगे भाई इंटू 180 अपॉन पाई। हमारा आंसर पाई के टर्म्स में आ रहा है, लेकिन हमने इसको देना है करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। आई वांट यू गाइस टू टेल मी कि क्या आंसर आ रहा है 55 डिग्रीज को कन्वर्ट करके। So 0.95 नहीं 0.960
हाँ, अब 0.9599 आ रहा है, जिसको फिर जब हम चेंज करेंगे तो उसको हम कर देंगे 0.960। ठीक है, सही। अच्छा ओके। अब हम करते हैं 123 को। 123 Excuse me, sir. जी विशाल। Sir, is it important that our calculator is on Radian mode for नहीं, this step, इसमें or it doesn't doesn't matter? इसमें it doesn't matter। Thank you, sir. ठीक है, you're welcome। देखो ये बाकी सब भी सुनना है कि कब इम्पोर्टेंट है कि हमारा कैलकुलेटर रेडियन मोड में हो और कब इम्पोर्टेंट नहीं है। जब भी हम, एक सेकंड में जरा नेटवर्क स्विच कर रहा हूँ। या ओके, जब भी हमारी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक एक्टिविटी होती है ना, जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन वी डूइंग साइन कॉस एंड टैन करके हम कुछ कर रहे हो, that is when it matters the most। ठीक है, other than that it doesn't matter। ठीक है, आप सिंपल कैलकुलेशंस कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इट डजंट मैटर। ठीक है सर बट डिग्रीज के अंदर वो पाई की टर्म्स में तो नहीं बताता ना, डायरेक्ट डेसिमल में दे देता आंसर। हाँ, डिग्रीज को डायरेक्ट वो डेसिमल में तो दे। अगर हमको पाई की टर्म में चाहिए होगा फिर तो रेडियन में होना जरूरी है। हाँ, अगर आपको एंगल पाई की टर्म्स में चाहिए, यस यस, तो फिर आपको इसमें रेडियन में कन्वर्ट करना चाहिए। ठीक है, अच्छा क्विकली लेट्स डू फोर्थ पार्ट बी आल्सो। यू हैव 2.5 रेडियन, इसको हमने कन्वर्ट करना है इनटू डिग्रीज, तो क्या करेंगे, इनटू 180 अपॉन पाई। सो 143.239 आ रहा है, सो हम इसको 143.2 कर देंगे। ठीक है, कोई भी एंगल हो डिग्रीज में उसको हम करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस ही देते हैं। ठीक है, अच्छा सो आई एम गोना स्किप ऑल एवरीथिंग एल्स। ठीक है, ये सब आपका वही टेबल आपने पढ़ना है। इट्स सेम थिंग, वी हैव डन दिस बाय द वे, जब हम वो कर रहे थे, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री कर रहे थे ना, तो वी डिड दिस। ठीक है, अच्छा सो अब हम आ रहे हैं जरा टुवर्ड्स सम रियल क्वेश्चंस। ठीक है, अगेन सम वेरी बेसिक क्वेश्चंस इनिशियली, लेकिन करना जरूरी है so that we get into the flow of things। ठीक है, so let's take a copy of this, let's bring it here। All right, so it says find in terms of pi the arc length of a sector। ठीक है, अच्छा arc length का क्या फॉर्मूला था, let's go back to our formula bank। arc length का हमने फॉर्मूला देखा था, वैसे तो it's the theta, it was theta upon 360 into 2 pi r, but we're not going to use that anymore। Instead we're going to be using s is equals to r theta। s is for arc length। ठीक है, so s equals to r theta। ठीक है ना, अब हमें एंगल भी दिया हुआ है, हमें रेडियस भी दिया हुआ है, सो इट्स जस्ट मैटर ऑफ पुटिंग ऑल दिस टुगेदर एंड ऑब्टेनिंग द आर्क लेंथ। ठीक है, और पाई की टर्म्स में आपने अपना आंसर देना है। ठीक है, फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन हर क्वेश्चन की अपनी रिक्वायरमेंट होगी, सो यू गॉट टू फॉलो दैट एंड रीड द क्वेश्चन केयरफुली। सो 6 into pi upon 4, so that means we're looking at 3 upon 2 pi। ठीक है, s is equals to 3 upon 2 pi। ठीक है, अच्छा I'm going to do part D also। part D में again you have s is equals to r theta, radius is 18, theta is 5 upon 6 pi, so 6 ones are 6 threes are, so 3 into 5 is 15 pi। ठीक है, pretty basic question। Usually I'd ask you guys to do do 2 parts myself and ask you guys to do 2 parts, but I'm not going to do that because they're pretty basic। let's save our time and energy for the more difficult parts। ठीक है, कोई question है तो बताओ, anything that you guys do not understand, so let me know। क्लियर सर। Clear? Okay, great। चलो ये क्वेश्चंस करते हैं, these are some nice questions। Okay, then it says find the arc length of a sector। again you're supposed to find the arc length। ठीक है, let's just do this together। इसमें जो आपका एंगल है वो आप देख सकते हैं पाई के टर्म्स में नहीं है, instead it's in radians। even in this question and also in the previous question it doesn't matter कि आपका कैलकुलेटर डिग्री मोड में हो रेडियन मोड में हो, you will get the same answer। ठीक है, because यहाँ पे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, अगर साइन थीटा कॉस थीटा कुछ होता ना, हम साइन कॉस में प्लग इन कर रहे होते, that's when it would have mattered। ठीक है, so 2 part ये मुझे बताएं कैसे करेंगे। I want you guys to do it। सर ऐसे रेडियन से 1.2 into डिग्रीज 8। में करेंगे। नहीं होता, रेडियन से डिग्री में करने की तो जरूरत नहीं है।
क्यों? क्योंकि हमें देखो ना, we have, what's the benefit of having two different formulas? The benefit of having two different formulas is so that we can use the formula accordingly. ठीक है, so when you already have it in radian, इसको हम convert क्यों करेंगे? देखो ना, s is equals to r theta. खुदा मुझे एक बात बताओ, s equals to r theta is the formula for arc length. Agreed? And this is when theta is in degrees. no, this is when theta is in, this is when theta is in radian. Oh, radian. ठीक है, so that means we don't have to convert it. Yes. ठीक है, रेड इस पूरे क्वेश्चन में, इस पूरे चैप्टर में ऐसा नहीं होगा कि आपको डिग्रीज को रेडियन में कन्वर्ट करना होगा और वाइस वर्सा. ठीक है, you won't have to do that. Okay. ठीक है, because we have two different formulas for each of them. Okay. सही? अच्छा. Yes. So s is equals to, अब मुझे बताओ कैसे होगा ये? 8 multiplied by 1.2. That's it. 8 multiplied by 1.2. ठीक है, whatever that is. 9.6 I think. नहीं, wait, 8 multiplied by 1.2. Oh, it is 9.6. तो का सही हो गया. Fair. Let's do part B. बताओ, you guys tell me how exactly are we going to do part B? 2.5 times 0.8. That's it. 2.5 times 0.8. ठीक है, which is, let's work it out. 2 और unit हम क्या निकालना है? Arc length निकालना है. So make sure at the back of your mind it's clear whatever it is that you're working out, and you unit तो वैसे आपको लिखना, हाँ लिखना है, unit लिखना है आपको. ठीक है, अच्छा. अब let's do question number 3. Question number 3 is pretty simple again. इसमें बस ये है कि you're given the radius and the arc length and you have to work out in radian the angle of a sector. ठीक है, so what is the formula that we're going to use? सबसे पहले तो ये बताओ. S is equals to r theta. S is equals to r theta. We're going to plug in what we know. S is 5, radius is 4, theta. So theta किसके बराबर हो गया? Theta बराबर हो गया 5/4 के. 5/4. And theta is equals to 1.25 radian. All right, let's do part B. Part B says again S is equals to r theta. The arc length is 13.5. The radius is 9. Theta is theta. So let's do 13.5 divided by 9. So again हमारे पास 1.5 radian. ठीक है, I hope everyone's on the इसको same. फ्रैक्शन में छोड़ सकते हैं. हाँ बिल्कुल छोड़ सकते हैं, बिल्कुल छोड़ सकते हैं. और देख लेते हैं सवाल में कुछ कंडीशन नहीं है तो बिल्कुल छोड़ सकते हैं. ठीक है. All right, let's do question number 4 now. Question number 4 says find the perimeter of each of these sectors. So what is it that we have to find? We have to find the perimeter. अच्छा, अब perimeter के लिए again no need to memorize a whole bunch of formulas. सही है. There are 3 lengths that we're gonna sum up, जिसमें से 2 तो हमारे पास बहुत आसानी से हैं, तीसरी के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है. ठीक है, so 4 plus 4, ये सबको पता है ना, ये भी 4 होगी. क्यों होगी 4? रेडियस है ना. ये भी रेडियस है. अच्छा, what about this? This we have to find it out. कैसे? This is the arc length. That means 4 multiplied by 1.1. ठीक है, so r plus r theta. So you have 8 plus 4 multiplied by 1.1 is 4.4, which means the perimeter is equals to 12.4 centimeter. ठीक है, pretty basic. इसके I want you guys to do part B and part C. And all of you should get it right. I'll be back in 2 minutes. By the time you guys are done, I'll be back.
Okay, are we done? Yes, sir. Yes, sir. All right, part B का आंसर बताओ. I'm working it out in my calculator as we speak. 32. 32. 32 centimeters. 32 it is. उसका आंसर बताओ. 31. 31 it is. Good job. Okay, so don't be surprised when you see कि ये तो इतना आसान है. This is actually very easy. ठीक है. Okay. So now we have some good lengthy questions. ठीक है. All right, सबसे पहले सवाल पढ़ते हैं. ठीक है, without touching anything at all, just read the question. So it says ABCD is a rectangle. ठीक है, AB is 6 centimeters. So yeah, the length from B to C is 16 centimeter. Okay, that's great. O is the midpoint of BC. OAED is a sector of a circle. So OAED, ठीक है, is a sector of a circle. Center O, find AO. ठीक है, so sometimes there's going to be a whole bunch of information. ठीक है, there's going to be a whole text, a whole bunch of text written. ठीक है. So don't be intimidated by it कि यार तो इतना सारा कुछ लिखा हुआ है, उसमें से सिर्फ काम की चीजें निकालो and just ignore the rest. ठीक है. So this isn't one of those questions जिसमें आप बिल्कुल overwhelmed हो जाएं by but this it is going to happen. ठीक है. So ABCD is a rectangle. ठीक है, that's great. AB is 6. So if this is 6, that means this is also this also has to be 6. ठीक है. Then you have the length from B to C, which is 16, and O is the midpoint. तो मुझे बताओ OB कितना होगा? 8. Centimeters. This is going to be 8. This is also going to be 8. ठीक है. OAED. So OAED का मतलब it's talking about this. OAED. ठीक है. This is what it's talking about. Is a sector. So yeah. And what are you asked to find? You're asked to find AO. So any leads on how we're going to find AO? Pythagoras theorem. Pythagoras theorem. ठीक है. The question didn't really need to tell us कि 90 degree. It told us that it's a rectangle, so that means it has to be 90 degrees. ठीक है. So इसका मतलब 8 square plus 6 square is going to be equal to, इसका square root कर लो तो हाथ के हाथ AO directly मिल जाएगा. So AO is equals to 64 plus 36, which is 100, square root of which is 10 centimeter. ठीक है. So pretty simple. अच्छा, फिर आता है part B. Part B says angle AOD in radian. Okay, now this is where things can get a bit, only a bit complex if you don't pay too much attention to what you are given. ठीक है. So AOD is basically this angle. ठीक है. अब ये इसके लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी. बताएं कैसे निकालेंगे? सर AD है हमारे पास, तो सर हम शायद साइन रूल लगा सकते हैं, एक सॉरी कॉस रूल लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तीनों साइड और एक एंगल है जो निकालना है. Okay. To be honest, that's not what I was Sir, thinking. triangle And that's का- also perfectly all right. जी बताओ बोला. Triangle का use करके we can find out the triangle वाला AOB and DOC which will be the same, and then उसको उसका sum 180 में से minus कर दो. ठीक है. Now that's what I was thinking. ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप वही वाला मेथड करें जो मैं सोच रहा हूँ. ठीक है. You can use any method, you're going to get the same answer. ठीक है. In fact, you know what? Let's do both the methods because I think both of them are equally legit, and उससे हमें ये भी कंफर्म हो जाएगा कि हमारा आंसर सेम आ रहा है. ठीक है. अच्छा, लेकिन इसमें आपने एक चीज का खास ख्याल रखना है कि अपने कैलकुलेटर का ना बिल्कुल सही इस्तेमाल करना है. You have to use the answer key a lot. ठीक है. So let me show you. First, I'll show you the method that I was thinking, which Huda and I were thinking. तो इसमें हम ये करेंगे कि हम पहले ये वाला एंगल निकालेंगे. ठीक है. ये वाला एंगल हम कैसे निकालेंगे? ये ऑपोजिट है और ये एडजेसेंट है. ठीक है. So हम क्या लगाएंगे? हम लगाएंगे tan. ठीक है. अच्छा, so we will say tan of AOB is equals to 6/8. ठीक है. कैलकुलेटर बिल्कुल एंड में इस्तेमाल करेंगे. एंगल AOB is equals to tan inverse of 6/8. ठीक है. And now you guys can probably see where I'm going with this. कि अगर अब मुझे चाहिए एंगल AOD, तो what I'll do is कि मैं करूँगा pi minus
2 times the answer की, ठीक है। और आंसर में क्या होगा, आंसर में ये होगा, ठीक है। समझ आया ये वाला मेथड कि मैंने क्या किया? यस सर। अच्छा, पाई में से क्या माइनस करने की क्या लॉजिक है, जरा ये भी समझाओ। सर टोटल जो सम है पाए तो खैर 180 है ना, तो सर Yeah. टोटल सम 180 है तो पाए Exactly. ठीक है, तो ये आपका पूरा पाई है, पाई में से हमने 2 टाइम्स वो एंगल निकाल के माइनस कर दिया, ठीक है। एक तो इससे चलो आंसर हम चलेगा। अच्छा, ये आंसर हम निकालेंगे बाद में, पहले जरा दूसरी वाली वर्किंग को लिख लेते हैं। दूसरी वाली वर्किंग वो जो अली ने मशवरा दिया, ये 10 है, ये 10 है और ये आपका 16 है, ठीक है। सो वी कैन यूज कोसाइन रूल। कोसाइन रूल इज यूज्ड व्हेन यू हैव ऑल 3 साइड्स एंड यू वांट टू फाइंड आउट एनी वन एंगल। तो अब इसमें हम कोसाइन रूल कैसे अप्लाई करेंगे? वी विल से cos ऑफ AOD इज इक्वल टू, बस ये याद रखो कि जो एंगल आप निकाल रहे हो उसके सामने वाली जो साइड है वो माइनस होगी, ठीक है। दैट्स द ओनली थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर। ये माइनस होगी, ये प्लस होगी और ये भी प्लस होगी। सो दैट मींस यू आर लुकिंग एट 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर। और जाहिर है जो साइड्स आपने सम किए वही 2 से मल्टीप्लाई भी होंगे, ठीक है। सो दैट्स जस्ट अ वे टू रिमेंबर कोसाइन रूल। सो AOD के लिए हम करेंगे cos इनवर्स ऑफ द आंसर, और आंसर में क्या होगा, आंसर में ये होगा, ठीक है। सो लेट्स वर्क इट आउट। अच्छा, इसमें हमारा कैलकुलेटर किसमें होना चाहिए फॉर दिस क्वेश्चन? रेडियन। इसमें रेडियन। Radian. इसमें अगर आपका कैलकुलेटर रेडियन में नहीं है ना तो गड़बड़ जाएगी। व्हाई? बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एक्टिविटी इन्वॉल्व्ड। सो हियर्स व्हाट आई एम डूइंग। फर्स्ट tan इनवर्स ऑफ 6/8 किया टाइम्स 2 किया और पाई में से माइनस किया आंसर, ठीक है। तो इसमें हमारे पास आ रहा है बॉयज एंड गर्ल्स 1.85, ठीक है। करेक्ट 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें इसका करते भी हैं, वही आएगा सर। इसका भी असूलन वही आना चाहिए। cos inverse of the answer, yep, 1.85. Sir, Mm-hmm. I did sine inverse 6/10. So I did 2 pi minus 2 6/10. तो फिर मेरा 1.94 आ रहा। नहीं नहीं, pi minus 2 times the answer करो, ठीक है। और Okay. आंसर में क्या होना चाहिए, अब आपको दोबारा से करना Like पड़ेगा। sine inverse वाला। हाँ, sin inverse 6/10, Okay. ठीक है। सही है, ओके। तो ये हो गया हमारा पार्ट बी। सो फार इट्स डन प्रीटी इजी, ठीक है, नथिंग टू डिफिकल्ट गोइंग ऑन। अच्छा, फिर आ रहा है आपका पार्ट सी, इन व्हिच यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट व्हाट, इन व्हिच यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन। अब देखो, चलो लेट मी आस्क यू गाइस, इसमें मुझे बताओ पेरीमीटर में कितनी लेंथ्स इंक्लूड होंगी? AED AO and OD। सो ऑल टुगेदर कितनी हो गई हैं? 3, ठीक है। AD क्यों नहीं इंक्लूड होगी मुझे बताओ? So it's not at the boundary। Yeah, it's not not the it's We not have at to the find the whole thing. yeah. In fact, you know what, मैं अंदर कोई 10 लाइनें भी बना दूं ना, वो भी इंक्लूड नहीं होंगी, ठीक है। सो इट्स ऑलवेज द बाउंड्री लेंथ्स। और पेरीमीटर के लिए कभी ये मत करना कि बड़े वाले शेप के पेरीमीटर में से छोटे वाले शेप का पेरीमीटर माइनस कर दो, ठीक है। दैट्स नॉट हाउ पेरीमीटर वर्क्स। एरिया में भी, यस, एरिया में भी होगा, लेकिन ये फॉर्मूला कभी नहीं जहन में बिठाना कि बड़ा वाला माइनस छोटा वाला, ठीक है। दैट्स नॉट हाउ थिंग्स नॉर्मली वर्क। ऑलवेज look at the figure closely and then apply the formula accordingly. So we're gonna add OA। अच्छा, मैं यहाँ पे R लिख रहा हूँ। R का मतलब क्या? I'm identifying कि ये रेडियस है, ठीक है। प्लस OD, तो यहाँ पे भी R लिखना है, प्लस AED, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आर्क, ठीक है, ताकि हमें पता है कि AED is basically the arc length। Okay, so we're almost there। सवाल हमसे सब कुछ निकलवा चुका है। 10 + 10 प्लस R इंटू थीटा, R का मतलब 10 इंटू 1.85, तो हमारे पास आ जाएगा perimeter of the shaded region। So perimeter is equals to 10 + 10, which is 20, plus 18.5, 38.5. which means 38.5 centimeter, ठीक है। So there you go, here's the answer। Okay, now any questions? It's clear. Clear sir। हाँ जी बोलें। Sir, आज 2:20 तक होगी क्लास, 2 o'clock. नहीं, 2 to 20ish।
Okay. अच्छा मैंने कॉपी किया था. Okay, this question I want you guys to try without my help. It's very similar. अच्छा एक चीज जरा क्लियर कर लें. You guys know what a segment is? Segment Yes, is हाँ बोले. ए बी है सेगमेंट से. नहीं ए बी तो कॉर्ड है. देखो एक काम करते हैं देखिए. Let's just clear all of this also while we're at it. तो सर जो कॉर्ड के नीचे का होता है वो सेगमेंट होता है. कॉर्ड के ऊपर जो होता है, ठीक है. ओ ओके. चलो Alright, so ये हमारा सर्कल है, ठीक है. ये जो आप देख रहे हो ना, जो मैं पर्पल से शेड कर रहा हूँ, दिस इज अ सेगमेंट, ठीक है. इट्स बेसिकली पार्ट ऑफ द सर्कल दैट्स बाउंडेड बाय कॉर्ड एंड द आर्क, ठीक है. सो कॉर्ड और आर्क के बीच में जो सर्कल का हिस्सा आएगा वो सेगमेंट होगा. अच्छा, देन समथिंग इंटरेस्टिंग आल्सो हैपेंस कि ये भी एक सेगमेंट है और इसके नीचे वाला जो हिस्सा है ना वो भी एक सेगमेंट है. लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि ये छोटा वाला सेगमेंट जो है ये माइनर सेगमेंट है और नीचे जो आप देख रहे हो वो एक मेजर सेगमेंट है, ठीक है. सो कॉर्ड और सर्कमफ्रेंस के कोई भी हिस्से से रीजन बाउंडेड जो होगा वो आपका सेगमेंट कहलाएगा, ठीक है. सेक्टर और सेगमेंट में क्या फर्क है? सेक्टर इज पार्ट ऑफ द रीजन दैट्स बाउंडेड बाय टू रेडियाई एंड द आर्क and arc. Yeah, part of the circumference. Segment is the region that's bounded by chord and part of the circumference. ठीक है. So I hope that's clear to all of you. और हाँ, ये ब्लू से जो मैंने बनाया है ये भी देख लो, ये chord होता है, ठीक है. chord क्या होता है? chord is basically a line that is joining two points on the circumference, ठीक है. So diameter भी एक तरह से chord है, but how is diameter different from any other chord? Is that diameter is a chord that is passing through the center, ठीक है. ये भी लिख लो. Diameter भी एक chord है, ठीक है, but it's a chord that is passing through the center. Diameter is a chord passing through the center, and it's also the longest possible chord that you can draw in a circle, ठीक है. Okay, yeah, go ahead. करें इसको सॉल्व. कोई कुछ कह रहा था? आई थिंक आप कुछ कहने थे. No, sir. That's it.
ठीक है, just hold on to your answer, अभी करते हैं इसको डिस्कस। ओके, बताएं आर्क लेंथ कैसे निकाली, क्या निकाली बल्कि? 10 multiplied by 2.3, ठीक है, so 6.8 का आंसर so होना 23. चाहिए है 23, तो इसको भी अलग टाइम पे डालना होता है। ठीक है, आप लोग बताएं 23 सही है। And पार्ट part की B लेंथ कैसे पे निकाली? sin 2.3 multiplied by 10. नहीं तो मैंने तो cos rule नहीं, लगाया। so कोसाइन रूल, कोसाइन रूल लगेगा। देखो ना, you have two sides and an included angle. So what do you do when you have two sides and an included angle? You use cosine rule. सर अगर ट्रायंगल को जैसे हाफ में करें हाँ, फिर कर सकते हैं, दो फिर कर 90 सकते हैं, डिग्री। फिर कर सकते हैं। Okay, then I did that, but I forgot to half फिर the भी angle. आपने 2.3 को हाफ नहीं किया ना, 2.3 को हाफ नहीं किया। Yes, sir. 2.3 को हाफ करके फिर आप you can work out half of AB and then times that by 2, so you will get the same answer. ठीक है। So And 23. नहीं ना, 23 तो फिर भी नहीं आएगा। 23 तो हमारे पास आर्क लेंथ आ रही है ना। Is it 16.13? Let me check. मेरी 18.3 आ रही है। 18.3 So yes, I'm also getting 18.3. ठीक है, अभी देखते हैं। So if I use cosine rule, तो cosine rule हम यूज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10 square plus 10 square minus 2 times 10 times cos of 2.3. Make sure your calculator is in radian mode. ठीक है, तो ये होगा आपके पास AB square या AB चाहिए तो डायरेक्टली इसको स्क्वायर रूट कर दो, ठीक है ना। So let's work this out. 10 square plus 10 square minus 2 times 10 cos of 2.3 bracket 1 18.3 आ रही है या सही है, 18.3। Yes. अच्छा, part C where you're asked to find the perimeter of the shaded segment, इसके लिए the question has already made you do all the hard work, so all you gotta do is just sum it up. 23 plus 18.3, ठीक है, so 41.3। ठीक है, are we all good here? Are we all on the same page? Yes. मैं यहाँ पे ना अभी थोड़ी देर में साइन रूल कोसाइन रूल भी लिख दूंगा ताकि आप लोगों के पास आ जाए सब कुछ एक जगह पे। Sir, part C का आंसर क्या होगा? 41.3 18 प्लस 18.3 जो भी था आपका, हाँ 18.3 प्लस 23 या Okay. ओके, ये सवाल करते हैं, चलो थोड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन है। It says triangle EFG is isosceles, all right, very helpful, with EG equals to FG, which is equal to 16 centimeter. ठीक है, we're gonna make full use of that. अच्छा, फिर क्या कह रहा है सवाल? फिर सवाल आपसे कह रहा है कि GH is an arc of a circle, center F, all right. अच्छा देखो, सवाल आपको जब भी आर्क बताएगा ना वो आपको साथ में सेंटर भी बताएगा। Why does the question need to tell you that? So that you can identify what angle it is that you have to use. जैसे for example,
ये मैंने गलत जगह पेस्ट कर दिया। ओके हाँ, सो जैसे यहाँ पे सवाल ने आपको दिया हुआ है OAED इज अ सेक्टर, सेंटर O, सेंटर वो आपको इसलिए बताता है so that you can you know what angle it is that you have to use, ठीक है। that is why the question सेक्टर के साथ साथ वो आपको सेंटर भी हमेशा बताएगा, ठीक है। okay, so it says triangle EFG is isosceles with EG is equals to FG, which is equal to 16. GH is an arc of a circle, center F with angle HFG equals to 0.85 radian. Find the length of arc GH. Okay, so this part is a no-brainer. आपको arc length चाहिए, बताओ कैसे निकालेंगे? Let's do this together. हाँ बोलो। 16 times 0.8. सर अगर ये क्या कहते हैं GHF अगर एक सेक्टर है तो उसका ये मतलब है ना कि HF भी 16 सेंटीमीटर है। हाँ, that basically means कि ये ऐसे थी कहानी। I mean obviously not as bad as how I've drawn, ठीक है, but yeah, ठीक है। So S is equals to R theta का मतलब S is equals to 16 times 0.85, so that is 13.6. कितना? 13.6. 13.6, ठीक है, thank you। अच्छा, फिर आते हैं पार्ट बी पे, where you're asked to find the length of EF। okay, अब आप लोग बताएं लेंथ ऑफ EF कैसे निकालेंगे? Sir, angle GEF will also be 0.85, तो फिर angle EGF निकाल सकते हैं। ठीक है, पाई में से माइनस करके उनका सम and then very use good। cosine rule। पाई में से इनका सम माइनस किया, हमारे पास आ जाएगा EGF, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारा पाई माइनस 0.85 times 2, ठीक है, 1.44। अच्छा, I'm gonna try and keep this in my calculator, okay? EGF is 1.44, या अगर आपने कैलकुलेटर में नहीं रखना ना तो फिर आप इसको एक प्लेस एक्स्ट्रा ले लो, ठीक है, 1441 कर लो इसको, ठीक है, बट इट्स ऑलवेज बेस्ट टू कीप इट इन योर कैलकुलेटर, ठीक है। अच्छा, सो ये आ गया आपके पास। अब आपने निकालना है EF। सो EF के लिए हम क्या यूज करेंगे बताओ जरा? cosine rule। या cosine rule, ठीक है। सो EF is going to be equal to square root of 16 squared plus 16 squared minus 2 times 16 cos, here I'm going to use the answer key, ठीक है। एंड उससे पहले आपने कैलकुलेटर में कुछ नहीं करना बिकॉज फिर वो आपका लास्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। सो स्क्वायर रूट ऑफ, हाँ जी बोलें। पार्ट 3 में ये 1.441 कैसे आया? देखो, तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, राइट नेहा? जी। दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब दो एंगल्स इक्वल होंगे। हाँ, ये भी कितना होगा? ये भी 0.85 होगा। एक ट्रायंगल के सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं नेहा? 180। 180 का मतलब रेडियन में क्या होगा? अच्छा सही है, थैंक यू सर। ओके ओके, सो आई एम लुकिंग एट 21.11, जिसको आई विल लॉक एट 21.1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आ गई क्या? ये आ गई हमारी लेंथ EF। अच्छा, अब अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि EH किसके बराबर होगा, जस्ट दिस लेंथ, बता सकते हैं आप लोग? 21.1 minus 16। -16, ठीक है। सो द क्वेश्चन विल नॉट ऑलवेज टेल यू कि अगर ये 16 है तो ये भी 16 है, ये अंडरस्टूड सी बात है और ये हमारी अजम्पशन नहीं है, ठीक है। अक्सर बच्चे समझते हैं कि हमारी अजम्पशन है, ठीक है। इट्स नॉट एन अजम्पशन, इट्स अ फैक्ट कि भाई अगर वो 16 है तो ये भी 16 है बिकॉज वी आर लुकिंग एट अ सेक्टर, ठीक है। सो हियर 16 एंड हियर इज 21.1, ठीक है। अच्छा, अब हमने निकालना है पेरीमीटर ऑफ द शेड रीजन। दिस आई वांट यू गाइस टू डू, ठीक है। सारी मेहनत तो वैसे हम कर ही चुके हैं, हाँ सभी कुछ तो कर चुके हैं। चलो लेट्स जस्ट डू इट। बताएं मुझे क्या होगा? Perimeter is going to be equal to, so EH plus EG plus GF। ठीक है। So EH के लिए we will do 21.1 minus 16, so let's do that। हाथ क्या? 5.1 13.6 plus 4.1 plus 16। very good, very good।
तो कितना आ रहा है बताओ जरा। सर 4.1 नहीं आएगा? Isn't it 5.1? 21.1 minus 16, हाँ 5.1 होगा ना। ओके 5.1 plus 16 plus 13.6. So we're looking at 34.7. ठीक है, क्लियर है? यस सर। यस Alright. ओके चलो हमारी ये भी हो गई अपना पेरीमीटर वाली एक्सरसाइज 8। अब हम कर रहे हैं एरिया, ठीक है। इसमें आएंगे हाँ जरा थोड़े मुश्किल क्वेश्चंस, बट मुश्किल वाले भी इतने मुश्किल नहीं होंगे। if you break it down, if you remember the formulas and which one to use at the right time, तब आसान हो जाएगा। ठीक है, सो ये शुरू वाले क्वेश्चन जरा ऐसे ही हम हंसते खेलते कर लेंगे सॉल्व। ठीक है, सो 8.3 का पार्ट 1 व्हिच सेज फाइंड इन टर्म्स ऑफ पाई द एरिया ऑफ सेक्टर। अच्छा, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर होता है हाफ आर स्क्वायर थीटा या फिर हाफ आर एस। ठीक है, इनिशियली अगर आपको फॉर्मूलाज नहीं याद कोई बात नहीं, इट्स ओके, नथिंग टू वरी अबाउट, लेकिन याद कर लेना उसको। ठीक है, द सूनर यू डू इट द बेटर इट इज। Yeah, there you go. Okay, so I'll write down the formulas over here. Area is equals to half r square theta, or area is equals to half rs. ठीक है? So let's solve question number 1, 2, and 3, and in fact even 4 without actually writing them down. ठीक है, ऐसे ही कर लेते हैं। So one part A says find in terms of pi the area of sector जिसका आपको रेडियस दिया हुआ और एंगल दिया हुआ। बताओ कैसे करेंगे? What formula are we going to use? half multiplied by 36 multiplied by pi upon 3. ठीक है, so let's do that. Half multiplied by 36 multiplied by pi upon 3. तो क्या आंसर आ रहा है बताएं आप लोग? 6 pi. 6 pi, very good. अच्छा, हाथ के हाथ पार्ट डी भी कर लो जरा। So 106 point, yeah, just 106. पाई की टर्म्स में बताओ ना। अच्छा, पाई की टर्म सर 135 pi upon 4. 135 pi upon 4. ठीक है, that's correct. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 करके दें मुझे दोनों पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 3 करके दें मुझे, और मुझे आप करके दें क्वेश्चन नंबर 4, both the parts. ठीक है, these are easy questions. 2 पार्ट ए का आंसर बताओ। 10.4. नहीं तो 10.4 तो नहीं है। So ये होगा half multiplied by 16 Oh, अच्छा, times सही 1.3. sorry, my bad. मैंने सवाल सही नहीं पढ़ा। ठीक है, I was looking at the other question. Okay, half, you're right, 10.8 it is. अच्छा, what about part B? 4.3. सही है। 3 part A, what is the angle? So I'm still doing that. सर इधर 1.1. 1.11111। यस सर, करेंगे। हाँ, recurring है। सर जब रिकरिंग होता है ऊपर डॉट लगा देते हैं ना? हाँ, या तो अगर 1.1 लिख के डॉट लगा दो 1 के ऊपर, या 1.11 लिख के 11 के ऊपर एक बार लगा दो। सर सर मेरा 3.33 आ रहा है क्वेश्चन 3A. आई थिंक आपने रेडियस को स्क्वायर नहीं किया।
हाँ, आपने रेडियस को स्क्वायर नहीं किया, आपने 10 डिवाइड बाय 3 कर दिया, whereas you were supposed to do Yeah. 10 divided by 9. Oh, okay. Okay, are we done with part B? So 1.22. 60 divided by 49, 1.22. So yeah. Part 4. Well, I mean question number 4. Chana 4 kare. And let me know when you're done. Oops, sorry about Sir, that. 3B का क्या आ रहा है? 1.22. Okay. Sir 4 है 0.8 है. Sir, angle of sector is same as angle of area of sector. No. Angle is the angle between the two radii. Area to area. Area is something else. ऐसा है. Okay. Sir, question 4A का 0.8 आ रहा है. You're given So the part B RT 40. 0.8 or part B S is equals to half RS use करोगे, so 10 into 8 upon 2. ठीक है, सही है. बाकी सबसे हो गया. नेहा, रामीन, विशाल. Sir, I'm just doing part B. ठीक है, करें. I'm waiting. What about you guys? Neha, Ramin, Vishal, are we all on the same page? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, carry on. सर आज कम बच्चे हैं ना. हाँ, हालांकि आज तो हम सर्कुलर मेजर स्टार्ट करके खत्म भी कर देंगे, ऐसा होना नहीं चाहिए था. आज ही खत्म हो जाएगा. कॉन्सेप्ट्स आज हो जाएंगे सारे. भाई अब क्या रहता है सही है. हमारा, अब हमारे मल्टीपल शेप्स, Done, sir. इसमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये वो सब होगा. ठीक है, पास्ट पेपर क्वेश्चन हम मंडे के लिए छोड़ देंगे. मतलब कुछ आज अगर हो गए तो सही है, नहीं तो फिर कुछ हम मंडे को कर लेंगे. देखो ना, इस एक्सरसाइज में और है क्या, इस तरह के अब वेरिएशंस हैं. ठीक है, सो आई वोंट हैव टू टीच यू अ न्यू कॉन्सेप्ट, वी जस्ट गोना हैव टू यूज द सेम कॉन्सेप्ट्स फॉर वेरिएशंस. ठीक है, ओके सर. ये एक ही सेटिंग का टॉपिक है, ये टॉपिक अननेसेसरीली स्ट्रेच करने की कोई लॉजिक नहीं है इसकी. ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 5 मैं करूंगा. सर जो ऑरेंज वाली बुक है उसके अंदर भी सर्कुलर मेजर के अच्छे सवाल हैं वैसे. उसके अंदर बिल्कुल है सर्कुलर मेजर के अच्छे सवाल, इसमें भी है, डोंट वरी, इसमें भी है, इसमें भी मुश्किल सवाल है. Okay, let's do question number 5. ठीक है, इसके बाद I'll do number 7, 6 आप लोग मुझे करके दोगे. ठीक है, in fact 7 भी आप कर ही सकते हैं वैसे. Okay, so it says here a sector of a circle radius r centimeter has a perimeter 150 centimeter. ठीक है, find an expression in terms of r for the area of the sector. Okay, so perimeter आपको दिया हुआ है एक सेक्टर का, और आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए एरिया ऑफ सेक्टर. तो पहले तो मुझे ये बताओ कि पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, r plus r plus r plus plus r r. by. ठीक है, so perimeter is 150. This is equal to r plus r theta. अब r plus r तो 2r हो जाएगा. चलो, there is no need to write that again. अब अगर मुझे एरिया ऑफ सेक्टर चाहिए, so एरिया ऑफ सेक्टर किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ सेक्टर बराबर होता है हाफ r square theta. Okay, so right now it's not in terms of r because of the theta. अब how do I change theta to something else so that the area turns out to be in terms of r? सर आप r कॉमन ले लें. Basically I will take r common here, तो हो जाएगा 2 plus theta, and now I'll make r the subject, तो हो जाएगा 150 over 2 plus theta, and मैं इसको यहाँ पे plug in कर दूंगा. ठीक है, so area is equals to 1/2 into r square. सही है. Oh wait, r को मैंने क्यों सब्जेक्ट बना दिया, my bad. किसको सब्जेक्ट बनाना था बताएं? थीटा. Sir, r को. नहीं, r को नहीं बनाना था, थीटा को बनाना था.
क्योंकि अगर हमें अपना आंसर चाहिए इन टर्म्स ऑफ आर, ठीक है, तो हमें Okay. थीटा को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। Yes. सो 150 अपॉन आर इज इक्वल्स टू 2 प्लस थीटा, ठीक है, और फिर अगर हम थीटा को सब्जेक्ट बना लेंगे तो हो जाएगा 150 अपॉन आर माइनस 2 is equal to theta, ठीक है। Now theta is equals to, let's write this nicely, बल्कि in fact we need to write it nicely, I've already written it. So half r square multiplied by theta, which means 150 upon r minus 2. अब आप इसको simplify करें, that's important. So हो जाएगा 1 upon 2, in fact 150 upon 2 हो जाएगा 150 r square upon 2r minus 2r square upon 2. I hope you guys understand what I'm doing. इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और फिर इसी को इससे Yes. मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, r स्क्वायर का स्क्वायर और 2r का r, so 150 upon 2 is 75 minus r square. There you go. Let me highlight this in green. ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे पास्ट पेपर्स में भी, where you have to find expressions, ठीक है। तो एक्सप्रेशंस, और ये उसमें तो बहुत ही कॉमन है आपको डिफरेंशिएशन में, जब आपको वॉल्यूम एक्सप्रेस करनी है, एरिया एक्सप्रेस करना है, तो इट्स वेरी कॉमन। अच्छा, नाउ आई एम गोना गिव यू गाइस, हाँ जी बोलें। Sir, 75 R नहीं होगा? 75 आर होगा, बिल्कुल सही कहा आपने, जब 75 आर इट इज। इसमें इफ यू वांट यू कैन टेक आर कॉमन, ठीक है, बट खैर उससे आपके ओवरऑल आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। So I want you guys to do सर question। ये हमने कल नहीं लिया था? हमने बिल्कुल इससे मिलता जुलता नहीं, सवाल अभी किया था, किया था। उसमें पेरीमीटर था, इसमें एरिया है। Okay. Want you guys to do this without my help. Formulas लिखे आप लोगों के पास या नहीं? है सर, लिख हैं? देखिए
Let me know when you guys are done. सर हो गया। पर सर आप बी और सी का आंसर बता सकते हैं? मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने पास आंसर्स खोल लेता हूँ। Just a second. सिक्स पार्ट ए का आंसर आना चाहिए। क्या आंसर आ रहा है बताओ? 9√2। 12.7 मैंने उसको 9√2 ही किया, 12.7। ठीक है, 9√2 भी चलेगा क्योंकि क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफाइड नहीं है ना, तो 9√2 भी चलेगा और आपका दूसरा भी चलेगा। ठीक है, जो भी इसकी डेसिमल है। 12.7 व्हाट अबाउट पार्ट बी? 1 उसका upon पाया 2 पॉइंट आ रहा है। 1.57 5.2 or in decimal also, which I believe decimal में it is 1.57 1.57। ठीक है, सही है। What about part C? 81 पाया 82.2 पॉइंट। 81 pi point। ठीक है, good job guys, good job, good job। Sir, I'm getting 82.2 एक second, let me check the decimal value of this। नहीं, अगर डेसिमल में आ रहा है तो 127.2 आना चाहिए, अदरवाइज 81/2 pi। एरिया ऑफ द शेड रीजन बताओ, एरिया ऑफ शेड रीजन कैसे निकालो? half times r square theta ठीक है, और क्या लिया आपने? 12.7 square multiplied by 1.57 डिवाइड बाय 2 नहीं क्या? तो 126.6 आएगा। Yeah, I must have made a calculation error. कैलकुलेशन वैल्यू सही है, कोई कैलकुलेशन एरर होगा। Okay. सर एरिया का आंसर क्या है? इधर 81/2 pi, ठीक है, या उसी की डेसिमल वैल्यू व्हिच इज 126 पॉइंट समथिंग। सही। 127.2, सॉरी, नॉट 126, 127.2। अच्छा, सो Sir, 126.6 आ रहा है तो उसको ऐसे ही रहने 126.6 नहीं है तो ज्यादा फर्क आ रहा है, तो यू शुड हैव यूज्ड योर आंसर की, या फिर एक काम ये सर करो। 126.36 आ रहा है। मैं बताता हूँ बेसिकली द थिंग इज if you're rounding off and if you're using your rounded off answers, तो फिर don't use your rounded off answers, basically that's what I'm saying। जैसे for example अगर आपने 9√2 निकाला है ना, 9√2 आपका आ रहा है 12.7, अब उसको 12.7 पे नहीं रोको। I mean give your final answer is 12.7, that's fine, but उससे पहले जो उससे पिछली डेसिमल वैल्यू है वो भी लिख लो, मतलब 12.727 है ना, 7279 है ना, तो यूज 12.728। ठीक है, अब इसको यूज करके करो। ठीक या है, फिर 9√2 को ही होल वो तो स्क्वायर आइडियल है, कर वो तो सकते हैं। आइडियल है। ठीक है, ओके। तो सर फिर 127.2 राइट? हाँ, ये आपका बिल्कुल एग्जैक्ट है। ओके ठीक है, अगर एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है ना, ये बाकी सब भी सुनना, अगर आपकी किसी उसकी एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है ना, and if you're using if it in some at some point in the question you have to use your answers to previous part to work out something else, then it's always best to use the exact value। ठीक है, so yeah, just keep that in mind। अच्छा, अब देखो, remember what I said कि angle properties of circles भी थोड़े बहुत आते रहेंगे, तो टेंजेंट वाली आ गई इसके अंदर। स्टैंडर्ड वाली आ गई, तो हम एक काम करते हैं, जो हमने फॉर्मूला बैंक बनाया है ना, इसमें हम यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है,
या बल्कि एक काम करता हूँ, मैंने इसका एक सेपरेट डॉक्यूमेंट पहले से बनाया हुआ है, ठीक है, मैं उसके पेजेस इसमें अटैच कर दूंगा थोड़ा टाइम बचाने के लिए, ठीक है, और फिर अपलोड कर दूंगा। अभी लिखूंगा तो खामखा टाइम ज़ाया होगा। Okay. I'm not going to attempt the whole thing, ठीक है, I'm just going to get you guys started, फिर हम इसको फिर आप लोग कंप्लीट कीजिएगा इसको। It says a circle has radius 12 centimeter and center O. PQ is a tangent to the circle at point P. ORQ is a straight line, ठीक है, find angle POQ and radian। अच्छा, ये angle 90 होगा, क्यों होगा 90? The question doesn't really need to specify or tell us. Tangent. We know this from before, from prior knowledge, that radius and tangent, whenever they meet, they form an angle of 90 degrees, ठीक है। अब POQ हम निकाल सकते हैं, we know it's a 90-degree triangle, that means we can use sine, cos, tan. What do you guys suggest I use here, sine, cos, or tan? Sir, 10. The sine, no cos, tan, take it. Yeah, tan. Tan POQ is equal to 35 upon 12, ठीक है ना? So now you can work out POQ. चलिए अब आप लोग करें इसको, I'm not gonna solve the entire thing. I'll just write tan inverse of 35 upon 12, ठीक है। फिर area of sector निकालें, which I'm not going to tell you how, and area of shaded Sir, region 1.24 आ रहा है उसका sir. again I'm not going to tell you Yes. how। क्या आ रहा है? 1.24. सही। Sir, हो गया. ठीक है। Done. Okay. I'm not gonna solve them, ठीक है, just gonna look at the answers to save some time. So number 7,
पहले पार्ट 1 पार्ट ए का आंसर बताओ। 1.24 degrees सही है। radians. पार्ट बी 89.28 89.3. 89.3 सही है। पार्ट सी 120.7. 120.72 सही है। ठीक है। Sounds good, sounds good. Let's do some more questions. अच्छा, I'm going to skip question number 8 not because it's easy. ठीक है। अच्छा, in fact I'm going to assign it to you guys as homework. 9 area triangle EFG is isosceles. Area sector HFG. चलो ये करते हैं। Let's do number 9. But let's do number 9 and 10 both. All right. So 9 says triangle EFG is isosceles with EG is equals to FG, which is equal to 9 centimeters. So the second you read isosceles, you should instantly mark कि ये भी आपका 0.6 radian होगा, ठीक है? Because it's isosceles. सही ना? अच्छा. फिर it says the area of sector HFG. कैसे निकालेंगे? जल्दी से बताओ. तो HFG के बाद हमारे पास वो भी है, रेडियस भी है और थीटा है, वो एंगल भी है, तो हम फॉर्मूला लगा लेंगे। 9 1/2 times r square theta 0.6. 9 square into 0.6. ठीक है? We'll work this out. 0.5 into 81 into 0.6. So 24.3. ठीक है ना? अच्छा, पार्ट बी में कह रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल EFG. ये कैसे निकालेंगे? सर पूरे ट्रायंगल का निकाल कर फिर एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस कर सकते हैं. That's part C. Part B में ट्रायंगल का ही एरिया निकालना है, ठीक है? But for part C, that's exactly what we're gonna do. So अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए कुछ है कुछ नहीं है, बताओ. How exactly do we सर इसको हाफ में करेंगे and then sin 0.6 is equals to the height upon 9. You're right, we will do that, but there's an easier way. भाई सर हमारे हम पास लोग EGF निकाल लेते हैं सर, Yes. क्योंकि AB sin C करना है। Yes, so we'll do sine of pi minus 0.6 minus 0.6. ठीक है? So when you have two sides and an included angle, which although we don't have the included angle, but we can find the included angle, right? Because we have the two other angles. ठीक है? Yes, और sir. समझ आया सबको ये वाली चीज? यस सर। ठीक है। और सर पार्ट ये सी एक में दफा और समझा सकते हैं? हाँ देखो, बेसिकली एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक फॉर्मूला होता है ना, हाफ AB sin C. When do we use that? We use that when you have two sides and an included angle. So two sides हमारे पास हैं, ये एंगल नहीं है लेकिन ये एंगल आसानी से आ सकता है. क्यों? क्योंकि तीन में से दो एंगल्स हैं. तीसरा निकालने के लिए we can always do Okay. 180 which is pi minus, जी मौसम में ऐसी खोलो सर्दी लगती है, बंद करो तो गर्मी लगती है. Pi minus 0.6 and 0.6. ठीक है? And that's what we did. And Okay, sir. ठीक है. और एरिया ऑफ शेड रीजन कैसे निकालेंगे? Part B का आंसर माइनस एरिया ऑफ part A. ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। पार्ट बी माइनस पार्ट हाँ, एरिया ऑफ सेक्टर हमें निकालना पड़ेगा. सेक्टर हाँ नहीं बल्कि निकाला होता है. ए और पार्ट बी के आंसर्स को माइनस करेंगे. ठीक है, we'll just leave it there. It's not okay. 10 आप लोग और सॉल्व करो, फिर 11 12 13 में से हम मिल बांट के सॉल्व करते हैं, फिर we'll do some past paper questions. ठीक है? In fact, before we start past paper questions, अली जो आपने permutation combination के सवाल पूछा ना वो पूछना. और सर फिर आपके पास ऑरेंज वाली बुक का वो है PDF? चाहिए आपको? क्या सर? चाहिए आपको ऑरेंज वाली बुक का PDF? उसमें से पूछना. नहीं सर, मैं कह रहा हूँ उसमें से, क्योंकि हमको स्कूल में वो पढ़ा रहे हैं ना, तो उसके मिसलेनियस के कुछ सवाल थे, वो पूछना था मुझे। हाँ ठीक है, तो मैं कह रहा था आप अपने पास खोल लें या फिर मैं आपको सेंड कर दूँगा। मैं खोल लेता हूँ अपने पास. तो
In the meantime, I want you guys to solve question number 10. Done, sir. Are we done? Yes, sir. I'm doing part B. Chalo, wait. You want to finish? Part A हो गया, show हो गया सबसे, इसका तो आंसर सामने ही है. जी Yes, सर. Yes. All right, sounds good. Sounds good. Done. सर इसके आंसर्स दिखा दें.
मैं बता रहा हूँ इसका आंसर। एक तो सामने ही है आपका, ठीक है ना, दूसरा आंसर मैं खोल के बताता हूँ। 54 पाई माइनस 36 अंडर रूट। पता नहीं इन्होंने इस फॉर्म में क्यों लिखा हुआ है, हालांकि कुछ कहीं स्पेसिफाइड नहीं है, तो कोई बात नहीं, अगर आप लोगों ने डेसिमल में भी दिया है। तो 118.7 आ रहा है इसका, मैं मैंने डेसिमल में भी देख लेता हूँ। जी मेरा सर। हाँ 22.8 118.7। सॉरी खुदा, आप क्या कह रही हैं? 22.8 आ रहा है। 32.8? नहीं नहीं नहीं, कोई कैलकुलेशन एरर 22। नहीं, नहीं होता फॉर श्योर, कोई कैलकुलेशन एरर है। थियोरेटिकली इसको कैसे करेंगे मुझे बताओ। सर मैंने ट्रायंगल को हाफ किया एंड उसका फिर एरिया निकाला, सो आई एम गेटिंग 25.53, उसको मल्टीप्लाइड बाय 2 किया and then I minused it from 12 multiplied by 3/4 pi. सर बात तो मैंने समझ नहीं किया किया आपने। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। हाँ करेंगे तो देखो, थियोरेटिकली तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ही करेंगे। अच्छा होता, देखो मेरी बात सुनो, while what you're saying theoretically is correct, but देखो जब आप अपनी कैलकुलेशंस में मजीद कैलकुलेशंस ऐड कर देंगे ना, तो आपके चांसेस ऑफ एरर बढ़ जाएंगे, ठीक है। इसलिए Okay. try and keep calculations to a minimum, and instead of doing it the way that you have done, वो half वाला करके, what you should have done is half multiplied by 12 multiplied by 12 multiplied by sin theta, ठीक है। जब आपके पास सारी इंफॉर्मेशन है, use the appropriate formula, then use the formula, ठीक है, make your life easy। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल दे देगा हमें, और इसको हम माइनस करेंगे फ्रॉम एरिया ऑफ सेक्टर which is half r square theta। उधर आपने मे बी शायद आपने इसको स्क्वायर नहीं किया ना, इस वजह से आपका आंसर सही नहीं आया। नहीं sir, I did that. तो फिर डेफिनेटली कोई कैलकुलेशन एरर है, there's no other possibility, Okay. ठीक है। Anyway, Neha, what about you? Sir, I have done this in this way, area of sector minus area of triangle. ठीक है, are you getting the right answer? Yes. अच्छा इब्राहिम, आई जस्ट सॉ कि आपने अभी ज्वाइन किया, मुझे बताओ आपको समझ आ रहा है? I joined a while ago. Yeah, I understand. ठीक है, sounds good. Okay, so that was question number 10, ठीक है। अच्छा अब let me have Sir a look। इसका आंसर क्या था? इसका आंसर 10 था part B का। 118.7 Okay. or 54 pi minus 36 under root 2, ठीक है। Okay. अच्छा let me see which questions to solve, which ones to skip। सारे आसान है वैसे तो, देखो जाए। Question number, in fact, you know what? I'm going to assign them to you guys as homework. चलो मैं हाथ क्या लिख लूँ, नहीं तो फिर भूल जाऊंगा। Hang in there. This is 8.3 circular measure. चलो 13 हम करते हैं, 8, 11, 12 I'm giving to you guys as homework. All right, let's read the question and let's see how we're going to solve this. So it says FOG is a sector of a circle, center O. Again, you can see it's given you the center with angle FOG equals to 1.2 radians. Okay, so we'll write that over here. जो भी आप पेपर में scribble करो ना, तो do it with the pencil and not with the pen. Okay, so you can erase it. EOH is a sector of a circle, center O with radius 5. So EOH, sorry, so that means ये 5 है और ये भी 5 है, ठीक है, according to the question or according to me?
The shaded region has an area of 71.4 centimeters square. Find the perimeter of the shaded region. So you will find questions like these where in some cases the question will make you work out everything part by part, ठीक है? And you know how part B के लिए part A का आंसर इस्तेमाल होता है, part C के लिए और भी दोनों का इस्तेमाल होता है, ठीक है? Those are some very nice spread out questions, ठीक है? But sometimes the question will just throw you out there and वो आपको सारी information देके directly बोलेगा ये निकालो ना, and this is going to be like a 5 to 6 mark question, ठीक है? And that's what this is like, ठीक है? इसमें part wise इसमें भी divide करेगा, ठीक है? But anyway, it's still easy, doesn't mean it's difficult. So perimeter of shaded region निकालने के लिए सबसे पहले तो आप एक काम करें, ठीक है? Just figure out कि theoretically perimeter आएगा कैसे, ठीक है? इन वाले questions में जो planning है ना वो बहुत important है, ठीक है? So you need to spend half the time planning and the remaining half working out whatever it is that you plan to do. So theoretically perimeter कैसे आएगा? Perimeter के लिए हम करेंगे HG, ठीक है? Plus EF और कौन सी दो लेंथ इसमें ऐड करेंगे? HE and GF. ठीक है, अब यहाँ पे जब आप HE लिखो तो आर्क लिख लो ताकि आपको याद रहे, और जब आप लिखें GF तो यहाँ पे भी आर्क लिख लो so that you know that these are arc lengths. अच्छा, what can you tell me about HG and EF? It's HG minus They 5. are equal. It's equals to GO minus 5 ठीक है, and FO minus 5. जो हुदा आप कह रही हैं वो भी सही है और अली जो आप कह रहे हैं वो भी सही है, ठीक है? जो भी आएंगी वो आएंगी माइनस करके 5 को माइनस करेंगे फ्रॉम द टोटल एंड दे आर बोथ गोना बी इक्वल, ठीक है? सो लेट्स जस्ट मेक अ नोट ऑफ दैट कि ये होंगी आपकी इक्वल, सही है? सो दिस इज द प्लानिंग पार्ट. नाउ वी प्लान्ड व्हाट इट इज दैट वी वांट in order to work out the perimeter. Okay, now let's approach the question head on and see what is it that we can work out. So there's something that we can work out immediately and that is the arc length HE. ठीक है, और वो हम कैसे निकालेंगे बताओ जरा, help me out. 5 times 1.2. So 5 times 1.2, so that means HE, the arc length, is basically equal to 6. 5 times 1.2, 6, yeah, 6 centimeter. Very good. अच्छा, अब देखा जाए तो हमारे पास क्या रह गया? हमारे पास रह गया है हमें GF आर्क चाहिए जो कि हम नहीं निकाल सकते, HG निकालना, HG चाहिए जो कि हम नहीं निकाल सकते. So that means अब ये जो उसने आपको दिया हुआ है ना, the shaded region has an area, इसका अब कहीं ना कहीं इस्तेमाल हमें करना पड़ेगा. अच्छा, अब shaded region का एरिया theoretically कैसे होगा? shaded region का एरिया theoretically ऐसे आएगा कि एरिया, बताओ मुझे, आप लोग बताओ, एरिया ऑफ शेड रीजन थ्योरेटिकली क्या होगा? Area of the sector minus 71.4. नहीं, 1/2 R square थीटा. बेसिकली हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर FOG और इसमें से माइनस करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर EOH, ठीक है? Does everyone understand what I'm saying? What I'm Yes, saying sir. is कि हम सबसे पहले तो निकालेंगे ये बड़े वाले सेक्टर का एरिया, इसमें से माइनस करेंगे छोटे वाले सेक्टर का एरिया, तो हमारे पास एरिया ऑफ शेड रीजन आ जाएगा, ठीक है? अच्छा, अब एक काम करते हैं, हम अपनी आसानी के लिए इसको हम R कह देते हैं, ठीक है? सो इसका मतलब ये हो गया हाफ R स्क्वायर थीटा माइनस हाफ 5 स्क्वायर थीटा. या बल्कि एक काम करते हैं ना, अभी हम जनरल टर्म्स में बात करते हैं, इसको हम कैपिटल R कह देते हैं, ठीक है? और इस छोटू को हम स्मॉल r कर देते हैं, ठीक है? सो दैट हमें क्लियर रहे कि हमें करना क्या है, सही है ना? अच्छा, अब देखते हैं जो जो वैल्यूज हैं वो 1 by 1 प्लग इन करते हैं, जो नहीं है उनको नहीं प्लग इन करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, आ जाएंगे. सो 71.4 is equals to 1/2 r squared theta, so that means times r squared times theta, which means 1/2 minus 1/2 times 5 squared theta, which means times 1/2. Okay, so you guys can probably see where we're going with this. So 71.4 plus 5 squared into 1/2 divided by 2, so ये 15 हो गया, ठीक है? ये this turned out to be 15, ठीक है? I hope you guys are with me. Here's 15. So 71.4 उस साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, so plus 15 is equals to 1/2 into r squared into 1/2. यहाँ तक समझ आया सबको मैंने क्या किया? जी सर. ठीक है? Yes, sir.
So let's do 71.4 plus 15, whatever that is, times 2. ठीक है, तो 172.8, this is what I'm looking at. 172.8 is equal to, बल्कि अब इसको इधर लिख लेते हैं. So that looks nice. 1.2 r squared is equals to 172.8. So r squared is equals to 172.8 मेरे कैलकुलेटर में, मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ by 1.2, so I'm looking at 144. तो जल्दी से बताओ r क्या आएगा? What's the square root of 144? 12. 12. It's 12. ठीक है, so 12 centimeter. ठीक है, so now we have pretty much everything to work out the perimeter of the shaded region. ठीक है, अब perimeter of shaded region चाहिए, so उसके लिए let's just put it all together and work it out one by one. So perimeter of shaded region is going to be equal to, अब मुझे बताओ considering कि ये 12 आ गया है और ये 5 है, तो HG कितना होगा? 12 minus 7 plus 7 again plus HE, which is the arc length, so that's 6 plus GF, which is the arc length. वो कैसे निकालेंगे बताओ जरा? 12 times 1.2. 12 times 1.2. ठीक है, so notice how the planning really helped us now. Now we know exactly what is it that we want and how is it that we're going to use it. So we're looking at 34.4, which is the answer. 0.4. 34.4. Okay. ठीक है, ये आ गया. So इस क्वेश्चन को आप आराम से एक्सपेक्ट करें कि ये 6 मार्क्स का होगा. ठीक है, ठीक है, आई थिंक दैट्स, चलो एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 11, आई नो आई गिव इट यू गाइस एज होमवर्क, लेकिन अभी मेरे सामने करना है आप लोग. ठीक है, बस ये आखिरी क्वेश्चन है, फिर हम मंडे को पूरा दिन लगा के इसके हम करेंगे पास्ट पेपर क्वेश्चंस. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 करें. अली आप अपना सवाल पूछें एंड we'll call it off. Sir, आपने भी एड मैथ का एग्जाम दिया था, right? Sir, how did you prepare for it, like closer to exams? मुझे याद कि नहीं, this was 2022 चल रहा है ना, this was 12 years ago. I don't even remember how. Past papers, yearly past papers, that's it. And like how much time every day? I don't think time, एक point पे आके time really doesn't matter, but it's about time से ज़्यादा जो आपको target set करना चाहिए ना after a certain point, वो है कि आपने कितने papers करने हैं. जैसे अभी आप लोग इस point पे हो कि आप लोग 60-70% of the paper attempt कर सकते हो. So I would suggest कि जब एक अच्छा खासा chunk of syllabus हो जाता है ना, तो उसमें फिर बेहतर ये है कि आप yearly past papers करो. ठीक है, yearly past papers करो, mark the questions जो of the topics जो हम cover कर चुके हैं. For example, if you open up a yearly past paper, ठीक है, hang on, अभी हम देख लेते हैं. ठीक है, कोई भी एक yearly past paper खोलते हैं और देखते हैं कि हम उसमें क्या क्या attempt कर सकते हैं. Let's open up a recent one. So let's say May June 2020 का हम पेपर 1 खोलते हैं, वेरिएंट 2. ठीक है, अब ये आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो. ठीक है, दिस इज क्यूबिक, we've done this. ठीक है, तो ये मार्क कर लिया, ये इसको भले छोड़ दो, you haven't done this yet. बायनॉमियल है, इसको अटेम्प्ट कर सकते हो. ठीक है, ये मार्क कर लिया. परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन छोड़ दो, फंक्शंस छोड़ दो, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन डोंट डू इट. Although differentiation integration to some basic वाला हम कर चुके हैं, but just leave it all together. ठीक है, kinematics आ गया, forget it. Trigonometry आ गया, इसको मार्क कर लो. ठीक है, ये पेपर 1 हो गया. इसी तरह से पेपर 2 को मार्क करो. ठीक है, and try and target कि आप एक दिन में कम से कम, इससे क्या होगा, इससे एक दिन में कम से कम आप
ये 2 पेपर्स कर लो, मतलब दोनों मिला के एक पेपर बनेगा, ये पूरा कर लो। इससे क्या होगा, इससे आपका एक थरो रिवीजन हो जाएगा। और शुरू में डोंट वरी टू मच अबाउट हाउ मच टाइम इट इज दैट यू आर टेकिंग। जैसे क्वाड्रेटिक्स है, इसको मार्क कर लिया, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ये कर लिया, अगेन ट्रिग्नोमेट्री, नहीं वेट, दिस इज डिफरेंशिएशन, फॉरगेट दैट, इंटीग्रेशन फॉरगेट इट, ट्रिग्नोमेट्री डू इट, ठीक है, इंडिसेस डू इट, APGP डेफिनेटली, सर्कुलर मेजर वेल आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ये भी आप लोग कर लोगे, ठीक है। सो इसके बाद अपना टारगेट करो कि आपने इसके थ्रू रिवीजन करना है, ठीक है। और ये अपना टारगेट कर लो कि आपने एक दिन में एक पूरा पेपर तो करना है, मतलब एक पूरा पेपर का मतलब पेपर 1 एंड पेपर 2। तो इससे ये होगा, आपका फ्लो में भी आ जाएंगे आप सारे टॉपिक्स के, और साथ साथ रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें भले आपको शुरू में 2 घंटे लगे, 4 घंटे लगे, 6 घंटे लगे, डजंट मैटर, ठीक है, बट दिस इज द वे दैट यू शुड बी रिवाइजिंग नाउ। क्योंकि देखो हम कर चुके हैं, वी हैव डन, आई वुड से हमारा क्या रह गया, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, काइनेमैटिक्स, वेक्टर्स। So that's what 3, 4, 5 topics, ठीक है। और फंक्शंस भी फिलहाल। Functions, yes, ठीक है, 6 topics. So that means we're done with more than 50% of the course, ठीक है ना। So इसमें to stay in touch with the 50% that we have done, do yearly past papers। और yearly past papers की एक और बात मैं बताऊँ, तो yearly past papers अगर आपको चाहिए ना, इसके detailed solutions वो आपको ब्राइट पे मिल जाएंगे, ठीक है। So you don't have to go through the marking scheme, like for example, in fact ये जो पेपर मैंने अभी खोला हुआ था ना, ये आई थिंक मैंने शायद, नहीं ये तो मैंने YouTube वीडियो के लिए बनाया था, एडवांस के डिटेल पॉसिबल सॉल्यूशंस कहाँ पे हैं पता नहीं, खैर यू विल फाइंड देम, ठीक है। और वो सारे ऐसे हैं कि यू नो बेसिकली वी हैव पीपल हु आर सॉल्विंग दिस पास्ट पेपर्स फॉर अस, और फिर उसको मैं वेट करता हूँ, मैं सॉल्यूशंस देखता हूँ कि दे आर अप टू द मार्क और नॉट, एंड दे आर नॉट जस्ट लाइक कॉपी पेस्ट फ्रॉम द मार्किंग स्कीम, दे आर वेरी वेरी डिटेल्ड, ठीक है। तो Yes. मिल नहीं तो रहा है। जैसे I was doing topical and then ये हो रहा था, जैसे मैंने पूरी binomials का कर लिया था and like वो सारे सही हो गए थे, but now because I'm doing another topic तो वो थोड़ा सा like I wasn't like remembering all the concepts. देखो शुरू में तो ये होगा, मैंने कहा ना, शुरू में आपको ये करने में भले आपको 4 घंटे लगे, 6 घंटे लगे, आपको थोड़ा पीक करना पड़े कि मे बी यूर सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक्स क्वेश्चन एंड यू फॉरगॉटन, तो भले नोट्स अपने सामने रख लो, ठीक है। तो ये तो आपको करना पड़ेगा, सही है, बट होगा ये कि ये आपको मे बी 2, 3, 4 दफा करना पड़े, उसके बाद आपके सारे कॉन्सेप्ट्स फिंगरटिप्स पे आ जाएंगे, ठीक है। फ्लो में आने का मतलब यही होता है कि शुरू में इट्स अ बिट बम्पी, लेकिन फिर सही हो जाता है, ठीक है। और शुरू में ये होगा, आई मीन लेट मी वार्न यू कि आपको ऐसा लगेगा आप ईयरली पास पेपर करेंगे ना, और ये हर किसी के साथ होता है, ठीक है, दिस हैपेंस एवरी ईयर, मैथ में भी खास तौर से जब आप ईयरली पास पेपर करते हो और आप देखते हो कि यार ये तो वो टॉपिक्स हैं जो कि आप कर चुके हैं, और यू नो एट दैट पॉइंट यू थॉट कि हाँ आपको ये आ गया, लेकिन अब तो आपसे हो ही नहीं रहा। सो दैट्स नॉट बिकॉज कि आपको समझ नहीं आया, जस्ट बिकॉज यू डोंट रिकॉल, you're unable to recall all the concepts, so that information is just there in your head, आपको बस recall करने में प्रॉब्लम हो रही है। So you do a bit of peeking, ठीक है, इधर उधर देखा, थोड़ी help ले ली, and then you'll have to do that a couple of times, but after a certain number of times you'll be, you know, solving them independently without taking help. Yes sir. सर अभी आपसे मैं पूछ लूँ वो सवाल परम्यूटेशन का। हाँ चलो पूछ लो, क्लास एंड होने वाली है, पूछ लो। सर आप खोलें या फिर मैं आपको पिक्चर ही भेज देता हूँ? नहीं मैं खोल लेता हूँ, खोलो। चलो मैं यहाँ पे लैपटॉप पे बुक खोल लेता हूँ, आप मुझे बताओ कौन सा क्वेश्चन है अंदर। सर मिसलेनियस है 15B। एक सेकेंड, 15 part B. ये find the number of ways in which a team of 6 batsmen, 4 bowlers and a wicket keeper may be selected from a squad. की बात करें? जी सर, इसका पार्ट B। The 6 batsmen may be selected from the 8 available, given that 2 particular batsmen cannot be selected.
टुगेदर। ओके ठीक है। अब देखो इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास आते हैं कि 2 पर्टिकुलर पीपल कैन नॉट बी इन द टीम, ठीक है। सो उसको हम किस तरह से करते हैं मैं बताता हूँ। इस तरह के भी आते हैं कि 2 पीपल कैन नॉट बी सेपरेटेड, ठीक है, ये भी होता है। सो चलो हम इसका पहले वो भी कर लेते हैं, पार्ट ए भी कर लेते हैं। पार्ट ए, फाइंड द नंबर ऑफ, पार्टी मैंने कर लिया, मैं आपको बता देता हूँ उसका आंसर। चलो ऐसे कर लो, 6 बैट्समैन, ठीक है। फर्स्ट लेट मी राइट सर जो पार्ट ए से पहले जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है सर, वो भी उसका आंसर 840 है। ठीक है। Maybe selected from a squad of 8 batsmen, ठीक है। So this you're selecting, कर ही लेते हैं उसको, तो वो थोड़ा फ्लो बन जाता है क्वेश्चन का, ठीक है। Right. 8C6, so because you're selecting combination यूज करोगे, 6C4 multiplied by how many wicket keepers, and a wicket keeper, so 2C1, ठीक है। इसका आंसर बता दो मुझे क्या आ रहा है। सर इसका 840। 840, ठीक है। Part A कह रहा है this team may be selected if it is to include 4 specified batsmen and 2 specified bowlers, ठीक है। So 8 part इसमें if you're including 4 specified batsmen, so that means अब आप कितने चूज कर रहे हो, अब आप 2 चूज कर रहे हो, और किस में से चूज कर रहे हो, जो 2 बच गए हैं उसमें से चूज कर रहे हो, ठीक है। And 2 specified bowlers, so that means अब आपको टोटल कितने चूज करने हैं, 4 चूज करने थे, और from how many, 6, so अब ये होगा 4C2, ठीक है। And yeah, that's it, और विकेट कीपर to 2C1। इसका क्या आंसर आ रहा है? सर 4C2 into 4C2 नहीं होगा, पहला वाला जो है वो 4C2 नहीं होगा 2C2 की जगह। पहला वाला 4C2 क्यों होगा? It says if it is to include 4 specified batsmen and 2 specified bowlers। जी सर, तो अगर 4 स्पेसिफाइड बैट्समैन इंक्लूडेड है और ऑलरेडी 8 है, तो अगर हमने उसमें से 4 निकाल दिए तो हमको 2 सिलेक्ट करने पड़ेंगे, तो सर 8 - 4 तो 4 होता है ना। अच्छा ठीक है, 8 - 4 is 4, yeah, you're right, मैंने उसको 6 में से देख लिया। एक सेकंड, let me just write this down, let me just write the information down first। 6 out of 8, 4 bowlers out of how many, 6, yeah, and 2, ठीक है, सही। ये हमारा पार्ट ए हो गया। इसका क्या आंसर आ रहा है बताओ जरा। 4C2, सर इसका 72। 4C2, so ठीक है, 6 into 6, 36 into 2, 72, ठीक है। Part B, okay. Part B says the 6 batsmen may be selected from the 8 available, given that 2 particular batsmen cannot be selected together. Okay. 6 batsmen may be selected from the 8 available, given that 2 particular batsmen cannot be selected together. अच्छा, तो इसमें पता है हमें वेरिएशंस बनाने पड़ेंगे। आप उन दोनों को एक साथ नहीं सिलेक्ट कर सकते ना। दैट मीन्स कि आप उन दो में से किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, दोनों को हटा के सिलेक्ट कर सकते हो, और दूसरे को भी सिलेक्ट कर सकते हो। सो देखो बेसिकली एज फार एज द नंबर ऑफ बॉलर्स एंड विकेट कीपर इज कंसर्न, वो तो हमारा सेम ही रहेगा, ठीक है। सो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं बैट्समैन, ठीक है, जो कि है आपके पास 8, यहाँ पे हम लिखते हैं बॉलर्स जो कि हैं आपके पास 6, और यहाँ पे हम लिखते हैं विकेट कीपर्स जो कि हैं आपके पास 2, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, हम दोनों को ही नहीं चूज करते, ठीक है। उनका साथ मसला ये है ना कि वो इकट्ठा नहीं खेल सकते, ठीक है। तो हम लेट्स एक्सक्लूड बोथ ऑफ देम। if you're going to exclude both of them, so that means अब जो हमारे पास टोटल 8 था, ठीक है, अब हमें सिलेक्ट अभी भी हमें 6 करने, लेकिन हमें किस में से करने हैं, 6 में से ना, क्योंकि दोनों को हमने दोनों को निकाल दिया। हमने कहा भाई अगर तुम दोनों को मसला है तो तुम दोनों ही उसमें से निकल जाओ, जो टोटल अवेलेबल है, हम बाकी 6 में से 6 सिलेक्ट कर लेते हैं। सो दैट मींस ये हो जाएगा आपका 66, और बॉलर्स का तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। बॉलर्स हमें कितने चाहिए, 4, सो दैट मींस 64, और विकेट कीपर हमें एक चाहिए, सो दैट मींस
2c1। ठीक है, ये निकालो कितना आ रहा है जरा जल्दी से। सर निकाल रहा हूँ। सर ये 30 आ रहा है। 30 आ रहा है। अच्छा, अभी तो हमने दोनों को निकाल दिया ना। अब हम एक काम करते हैं, देयर आर टू, बेसिकली समझो देयर आर टू प्रॉब्लम चाइल्ड। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, उसमें से एक को निकाल देते हैं। ठीक है, तो एक को अगर हम आउट कर रहे हैं, सो दैट मीन्स अब हम कितने में से सिलेक्ट कर रहे हैं, अब हम 7 में से सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा 7c6 मल्टीप्लाइड बाय टाइम 64 टाइम्स 2c1 2c1। ये कितना आ रहा है? निकाल लो। 14 14। नहीं, एक मिनट 64 सर 210। अच्छा, अब यही चीज हम करते हैं किसके साथ, यही चीज हम करते हैं दूसरे के साथ, दूसरे को भी निकाल देते हैं। समझ आ रही बात? उसके लिए भी क्या होगा, उसके लिए भी डिट्टो तो ही यही चीज मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगी सर, यही चीज मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो और फिर इन सबको ऐड कर देंगे। इन सबको ऐड करो, ये हो जाएगा आपका 210, 420 प्लस 30 450। यही आंसर। सर देखता हूँ कितना आ रहा था सर आपका। 450। 13 लिखा हुआ है पीछे। 13 जी सर। ओ एक सेकंड 6c6 इंटू, ठीक है मैं समझ गया, 7 13 या 15? 13 लिखा हुआ है सर 13। आंसर तो गलत ही लिखा हुआ पीछे। सब बहुत रेयर होता है। एक जो इसमें गड़बड़ है वो ये कि इसमें हम सिर्फ बैट्समैन सिलेक्ट करें, वी नॉट सिलेक्टिंग द एंटायर टीम। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी इट्स नॉट 13। देखो बेसिकली इट सेज फाइंड द नंबर ऑफ, पार्ट ए में पूरी टीम का था, पार्ट बी में जो है ना उसे बैट्समैन की बात कर रहा है। द 6 बैट्समैन मे बी सिलेक्टेड फ्रॉम द 8 अवेलेबल गिवन दैट 2 पर्टिकुलर बैट्समैन कैन नॉट बी सिलेक्टेड टुगेदर, लेकिन उसके बावजूद भी इट्स नॉट 13। उसके बावजूद भी इट्स नॉट 7 c6 7 times 2 plus 1, it has to be 15। चलो मैं अपनी कॉपी में देखता हूँ आंसर इसमें। This is that'd be 13। अरे लेट मी गेट बैक टू यू विद दिस। ऐसा बहुत रेयर होता है कि पीछे आंसर गलत हो, बट फिर भी आई एम गोना चेक एंड लेट मी गेट बैक टू यू। सर इतने में दूसरा पूछ लूं। हाँ पूछो। सर 17। ठीक है, मिसलेनियस का। जी सर मिसलेनियस के सारे सवाल। सर 17 के अंदर वो वन ऑफ द 6 एप्लीकेंट्स का से शुरू हो रहा है, उसका जो पार्ट ठहरो 3 है वो। सर आप सर्कुलर मेजर और तो नहीं कराएंगे ना? नहीं सर्कुलर मेजर और नहीं करा। इफ यू गाइस वांट टू लीव यू कैन लीव। अल्लाह हाफ़िज़ सर, थैंक यू। You're welcome।